Hello students, after a heavy request from you, myself Brahma sir presenting keys and solutions of the pretest examination of second year workshop calculation science on both fitter and electrician trade, which was conducted on first week of March 2023. Going to the topic, the first question was which affects the center of gravity of the object. चार्टा ऑप्शन अच्छे आम पाखे दैट इज ए वेट मास डेंसिटी एंड शेप आंसर तार हूँ ग्राविटी इज ए डाउनलोड पुल और फोर्स दैट द अर्थ एक्सर्ट्स ऑन द बॉडी योर सेंटर ऑफ ग्राविटी इज द पॉइंट वेयर द मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड सो यार करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन बी मास से भाई क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट व्हिच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड ऑप्शन ए इनिशियल पॉइंट बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी सेंट्रोइड डी सेंट्रल पॉइंट आंसर which the whole mass of the body acts irrespective of the position of the body is known as center of gravity. आउ थे तुम मन पकईदेली द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स इज नोन एज सेंट्रोइड बा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी से हिसाब से आम कैलकुलेट कले देखा द इट इज करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी h/4. Question number 5. What is the center of gravity of a rectangular body? Longer side of rectangle, shorter side of rectangle at the point of intersection of its diagonals and at its corners. Answer होची the point through which the whole mass of the body acts irrespective of the position of the body is known as center of gravity. Again I am repeating geometrical figure ର center of gravity को centroid कुहा जाए. The option C correct answer होची option C at the point of intersection of the of its diagonals corner जो क्रॉस सेक्शन हुए से जगह ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी थाए. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर हेले गोलक अर्धगोलक जहाँ आम कहूँ तार कौट थाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी. चार्टा ऑप्शन अच्छी 4r/5 3r/8 3r/4 r/2. आम देखा द पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम कह जाए जोटा कि जार थ्रू व्हिच द होल मास ऑफ द बॉडी which formula is suitable for the area of a circle whose diameter is d. तो d दे देइछि तार एरिया केमती काढ़ा ऑप्शन देइछि पाई d स्क्वायर बाय 4 पाई r 2 पाई r पाई d. एक्चुअली करेक्ट आंसर होछि पाई d स्क्वायर बाय 4 कहीं ना रेडियस होछि डायमीटर बाय 2 डायमीटर माने d बाय 2 एरिया होछि आमे जानिछु दैट इज पाई r स्क्वायर r जगह d बाय 2 बसै कि स्क्वायर कर देले आंसर वी गॉट pi d square by 4. So the correct answer is A pi d square by 4. Question number 9 को मूविंग करिवा सर्कमफरेंस सेमी सर्कल रो केते तो एटार ऑप्शन देछि पाई r 2 पाई r plus 2r pi d by 4 2 pi r square pi d square 4.
दैट मीन्स द फॉर्मूला जो सर्कमफरेन्स रो फॉर्मूलाटा कौन दैट इज पाई आर प्लस 2r वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल बट आम जाचु डायमीटर हूँ d जोटा कि इज इक्वल टू 2r तेणु आम हाफ सर्किल जोटा बाहर करवा जोटा टोटाल सर्कमफरेन्स रो अधा प्लस आमर डायमीटरटा दैट मीन्स पाई d by 2 प्लस d दैट मीन्स आंसर है पाई आर प्लस 2r तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए देन क्वेश्चन नंबर 10 को गले व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर हुज पेरीमीटर हूँ गोटे ऑफ एन आर्क केमती कढ़ा जाए ना यहाँ हूँ रेडियस प्लस आर्क लेंथ प्लस एगेन रेडियस तो पेरीमीटर दे 64.8 रेडियस टू बी इज इट गिवन 12.4 सेंटीमीटर सो 64.8 हूँ 12.4 एगेन आर्क लेंथ एगेन 12.4 तो आर्क लेंथ आसीगला 64.8 माइनस 24.8 दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर से क्वेश्चन नंबर 11 को व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर इफ द डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 60 डिग्री ऑप्शन गुड़िक है ए 18.2 17.75 19.0 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है वी नो दैट द एरिया ऑफ द सेक्टर हूँ रेडियस जदि आर थाए सेंट्रल एंगल 0 डिग्री होता है देन आमर सूत्र हूँ एरिया रो the theta by 360 degree into pi r square here we need to find the radius of the circle that means radius होची diameter formula ला 12 by 2 कर देबा 6 cm पाई जीबा as per question value गुडी को पुट कर देबा formula रे that means area होची 60 by 360 into 22 by 7 into 6 into 6 तापरे सब गुडी को गुणी देला परे रिजल्ट वी गेट 18.855 सेंटीमीटर स्क्वायर that is nearly equal to 18.84 centimeter square which is the option D. Question number 12 what is the area of the circle whose diameter is 50 centimeters ऑप्शन गुडी गला 900 सेंटीमीटर स्क्वायर 950 सेंटीमीटर स्क्वायर 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर 960 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर गुडी गला हमर डायमीटर दे देछि 50 सेंटीमीटर रेडियस दे देछि रेडियस टा बाहर करि परिबा 50/2 कर दवा 25 सेंटीमीटर बाहर गला एरिया टा पाई स्क्वायर बाहर गला 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज ऑप्शन सी एबोली क्वेश्चन नंबर 13 को जिबा रेडियस दे देछि सर्कमफरेन्स दे देछि रेडियस काढिबा सर्कमफरेन्स होछि 440 सेंटीमीटर ऑप्शन गुडी को 71.5 70 70.1 72 कोटा ठीक लेट आर टा धरनवा तार रेडियस ताहले आमे जानचु जे सर्कमफरेन्स होछि 2 पाई आर सेटा दे देछि तारे 2 पाई आर एतिकी आर केते कटा कटी करी 5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 8.75 सेंटीमीटर जहाँकि तुम स्क्रीन रे देखि पारथिबो तो आर करेक्ट आंसर है सर्कमफरेन्स है 36/7 इंटू आर तो सेटा वैल्यू आम पाई जाइए 28.26 तापर वज्र गुणन करी आर को लेफ्ट साइड को नहीं जावा 28.26 से 5.24 को हरिदेवा तो रेडियस बाहरी पड़ो 5.49 तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर व्हिच इज 5.49 सेंटीमीटर 15 व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल द सर्कमफरेन्स द सेमी सर्कल दे 21.98 एटा होची सर्कमफरेन्स दे देछि आमे परिसीमा दे देछि आमे अर्धवृत्तर डायमीटर काढिबा अर्धवृत्तर परिसीमा दे देछि हमर माने पाई आर प्लस 2r दे देछि एतरु पाई आर प्लस 2r होची 21.98 देन आर टा केते काढिबा तो यही सूत्र रे आमे लेफ्ट राइट करी आमे जदि सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करिबा पिक्चर रे देखि पारथबो 21.98 हैला r into 5.14 तो r को हरि देवा 21.98 बाय 5.14 जार विल गेट इट 4.276 जदि रेडियस बाहरी गला डायमीटर होची दुईटा रेडियस सहित दुईटा रेडियस रो वैल्यू
तो आमर आंसर है राडियस होची डायमीटर टू राडियसटा काटिदेवा भैल्यूटा जोटा कि 7 सेंटीमीटर रहीगला। तो एरिया है पाई आर स्क्वायर बाई 2 सूत्र कहीं ना यहाँ सेमी सर्किल सर्किल होते आम खाली पाई आर स्क्वायर काटते। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 तो यहाँ भैल्यू पुट करदे आर जगह 7 सेंटीमीटर टोटाल बाहरला 77 सेंटीमीटर स्क्वायर दुई इज इक्वाल टू आमर ऑप्शन गुड़िक भितर नजदीक कहार नजदीक अच्छी 76.93 जोटा कि आम 77 कहीपर। सो इज आंसर बी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 17 वाज द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल दे देइची डायमीटर काढियार अछि 29 ऑप्शन गुडी होची 29 सेंटीमीटर 29.30 सेंटीमीटर 30.5 आमे जानिछु जे हो एरियाटा दे देइची 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायमीटर काढियार अछि एरिया होची पाई आर स्क्वायर दे देइची हमकु आरटा बाहरी जीवो आर सॉल्यूशन करी देख आम लास्ट वर्गमूल काढ़ी 225 आर पाइले 15 राडियस हो गला 15 डायमीटर होची 2 टाइम्स ऑफ राडियस दैट मीन 2 into 15 दैट इज कॉल्ड 30 सेंटीमीटर आमर तेणु ऑप्शन करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर एटा ठीक अछि। Then question number 19, what is the direction of frictional force against the motional object? Inclined to the object, opposite to the object, parallel to the object, perpendicular to the object. এটা হচ্ছে frictional force offers the resistance to the applied force opposing its motion, thus it always acts in the direction opposite to that of the object in motion। तार मोशन रो opposite direction रे काम करे frictional force always। तेणु एटार करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी opposite to the object। Question number 20, which force is directly proportional to the normal reaction between contacting surface? Pulling force, pushing force, frictional force, allied force? Obviously it is frictional force kaiki na where the frictional force is Fk हुए the coefficient of friction is mu k and the normal reaction is n, then the normal reaction of that is equal to the weight of the body। এটা মনে রাখতে হবে নর্মাল রিঅ্যাকশনটা ওয়েট অফ দি বডি তার অপোজিটে থাকে কিন্তু সদাବେଳେ সমান থাকে। তেণু so the kinetic friction is directly proportional to the normal reaction of the body। तेणु correct answer option से frictional force। 21, which one of the following acts in between the wheels and roads if vehicles are able to run on roads? Friction, corrosion, erosion, motion। correct answer is friction is acting between wheels of running vehicle and ground। तेणु correct answer is option A friction। 22, which is useful friction? Rings in the cylinder, crankshaft bearing, wheel hub bearing, brake shoe lining। माने यूजफुल कोटा हमको उपादेय फ्रिक्शन एटा हला ब्रेक लाइनिंग फ्रिक्शन होची मटेरियल अटैच टू द फेस ऑफ द ब्रेक शो टू कॉज फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द ब्रेक शो मेक्स कांटेक्ट विथ द ब्रेक ड्रम सहित कांटेक्ट रे आसे ड्यूरिंग द टाइम ब्रेक मारू ब्रेक लाइनिंग अप्लाई करे फ्रिक्शनल फोर्स को टू ए सिलिंड्रिकल जो आमर ड्रम टी थाए व्हील लगी थाए एटा को हमको स्पीड कमेवाई एंड वेहिकल उपरे कंट्रोल पाइबापी से दैट द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जोटा कि आमर ये फ्रिक्शन आमको हेल्प करुच्ची आमको बॉडी कंट्रोल करियारे तेणु यहाँ ब्रेक शो लाइनिंग हम। 23 है व्हिच इज वेस्टफुल माने जो फ्रिक्शन द्वारा आमको लाभ हुए किसी चार्टा ऑप्शन अच्छी रियल एक्सेल गियर टायर्स ऑन द फ्लोर ब्रेक शो लाइनिंग क्लच लाइनिंग। देखो इन एनी टाइप ऑफ व्हीकल सच एज कार बोट एयरप्लेन एक्सेस फ्रिक्शन मीन्स दैट एक्सट्रा फ्यूएल मस्ट बी यूज जदि आम फ्रिक्शन अधिका हो कौन हम आम तेल अधिका खाइब तेणु पावर ऑफ द व्हीकल कमिज फ्यूएल और एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड ये वेस्ट हो जाऊँगी आमर तेल तेणु फ्लूइड फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस कैन ग्रेटली रिड्यूस द गैस माइलेज इन एन ऑटोमोबाइल। तेणु करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए रियल एक्सिल गियर जोटा जाई आमर से फ्रिक्शन टा किसी काम को आसेनी। 24, व्हिच इज डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स? टाइप ऑफ मेटल्स, कॉन्टैक्ट सरफेस, क्वांटिटी ऑफ कंटेनिंग मेटल्स, क्वालिटी ऑफ मेटल्स। फ्रिक्शनल फोर्स उपरे कहार प्रभाव अछि? आंसर हला फ्रिक्शनल फोर्स को कारण गुडी को ऊपर निर्भर करछि मटेरियल ऑफ द बॉडीज ऑफ कांटेक्ट दुईटा बॉडी कांटेक्ट आसुंदी तार को मटेरियल ले तयारी ता ऊपर फ्रिक्शनल फोर्सटा डिपेंड करे। 2 नंबर रे क्वालिटी ऑफ मेसिनिंग ऑफ द सरफेस इन कण जो सरफेसटा कांटेक्ट रे आसुची तार मेसिनिंग उपरे माने फिनिशिंग उपरे भी निर्भर करूची। सेकंड प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मैटर बिटवीन सरफेस जाने आम जमी दुईटा कंटाक्टिंग सरफेस तरह लिक्विड पकईदे खसीज फ्रिक्शनल फोर्स कमिज सेमती तार जो फॉरेन मैटर रो प्रेजेंस उपरे भी डिपेंड करूची। 4 रे एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट गोटे
दुईटा बॉडी कंटाक्ट आसुचंदी माने एरिया जेते बड़ हम फ्रिक्शनल फोर्स एते अधिका हम तेणु एक्चुअली करेक्ट आंसर है कंटाक्ट सरफेस बा ऑप्शन बी जोटा कि एक्चुअली तार ऊपर डिपेंड करुच्ची फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 25 हाउ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड ऑप्शन गुडी गला इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन and ratio between normal reaction and mass of the agent and expressed as the ratio of weight। actually answer होउची यार coefficient of friction ratio of the frictional force resisting the motion of two surfaces in contact to the normal force pressing the two surfaces together तेणु it is used माने it is the ratio between frictional force and normal reaction। I hope this solution and keys will be very much helpful to you। Thank you।